A very good evening to everybody. 10 o'clock and my tips are ready. Today is the last session for essays, and we will be discussing a very typical kind of an essay, advantage, disadvantage. It is also called as the positive negatives. Both are same, both can be handled in the same way. So let us start our work. A very good evening to everybody. 10 o'clock. Writing tips, advantages and disadvantages essay. So this is going to be discussed today. Now these essays, there's a very fair chance, like 25%, that these essays are going to come. Very fair chance. So it is very important that you know how to handle this. Now, in case you haven't followed us on social media, do follow us on Webberz Educomplimited. That is the channel that you're seeing. Every day at 10 o'clock, there are IELTS tips. From tomorrow, we are going to start with speaking tips. We will be having a full workshop on speaking from tomorrow onwards. Tomorrow onwards, we will be having a full workshop for speaking. That is 10 o'clock onwards. I'll be giving you the link and I'll be calling a lot of volunteers to come on the stage and speak. We've got this wonderful blog. Do follow that. Today we're going to visit the blog also. There is Instagram where the latest news are published, and this is our number for online and offline. If you want to have any kind of information of online or any kind of information of offline, you can obviously reach out to these people and they will help you out with whatever they can. If you want any material or if you want any resources, they can easily help you out with a lot of stuff. They're going to help you out. Let us start with our class now. So these are the different types of advantages and disadvantages essay. These are the subcategories. Now you can be asked simply, what are the advantages? What are the disadvantages? What are the advantages and disadvantages? Do the advantages outnumber disadvantages, means which is more? So now, instead of advantages, it can be what are the positives, what are the negatives, what are the positives and negatives? Do the positives outnumber the negatives? This can be the same thing. Only the language is different. The style of attempting it is almost the same. So today we'll be focusing on all these 4 essays, and I have got for you very difficult kind of a thing that you have to really think about. And these are the essays which came in the real exam. So we are going to discuss, these are 4 formats. Let us see what are the formats. This is format number 1, format number 2, format number 3, and format number 4. So we are going to discuss all these 4 formats. But first, I'll be discussing the first 3 formats with you. The first 3 formats and how to write it down. Format 1, format 2, and format 3. Now I'm going to take you to the blog. Let us go to our blog. So all you have to do is just type www.webberz.in. And once you go to the website, you go to the blog. When you go to the blog, you go to IELTS and you go to IELTS writing. If you go to IELTS writing, you will be seeing I have just added it today. I'm telling you time and again, ये मैंने link आज अभी add किया है. 2 घंटे पहले this link has been added. It has got some wonderful information. So do see this link. It's a great link. IELTS writing topics, advantage, disadvantage. When I click on this, I will see a list of the topics which are there. Something close to 32 topics are there. Out of these 32 topics, I have picked up 2 topics for your discussion. 2 topics for your discussion. So we will be working out on those 2 topics for your discussion. The first format, I'll show it to you. And the second format also, I'm going to show it to you. And I'm going to explain it to you. How does it work? So let us see, how does it work?
So I'll close the blog. I'll visit the blog once again. That is later on. So right now, we will go ahead with choose this. Many retired people today are choosing to live in other countries. What are the advantages of this? What are the disadvantages of this? What are the advantages and disadvantages of this? Now, this can come in any of the three formats. The three formats are, this is format number 1, this is format number 2, and this is format number 3. So you can write it down. The essay can come in any format. So we have to know what are the points that we're going to write down in this particular essay. The problem with this essay is that this essay, many retired people today are choosing to live in other countries. This essay is not applicable to India. If you see Indians, when they retire, they do not go to other countries to live in. Very simple. So what do they do? So let us see, where do Indians go when they retire? So either they are with their children, or they stay alone, or third option is they stay with some relatives and all, and fourth option is they go to an old age home. That old age home can be anywhere. It can be in Rishikesh, it can be in Dehradun, it can be in any damn place, but they go there. So these are the four options what Indian old people, retired people have. First is to stay with the children. Second is to stay alone at home. Third is to stay with some relatives or joint family. And fourth is obviously to go to some place where there are old age homes. But in abroad, apart from these, there's a fifth option called as going to some other country and staying there. But now in abroad, if you talk about children, they don't stay with the children. That's for sure. So this option is ruled out. Second is they stay alone. That option is there. Third is that they stay with the relative. That option is also not there. Nobody stays with the relative, right? And fourth option is they go to some religious place to live there. Yeah, they have old age homes. They stay there in old age homes. They stay alone, or they go to some other country to stay. Now, this fifth option is the one that is having the essay today. Now, if I look at the essay, this essay is not applicable to India, okay? Choosing to live in another country, because our parents are totally dependent on the children. So whatever the children will do, they will do that. So now if the children say, let us take your cases, okay? Now you people are there and your parents are getting older and you go to Canada or you go to Australia or New Zealand or whatever the country that you choose to go to. Now, if you go to those countries, what will you do when you are there? Number one, you can call your parents to yourself, right? Number one. Number two, you tell your parents to stay wherever they are and you keep on sending them money. These are the two options. Or thirdly, they might go to old age homes, but that is very, very rare, very rare. In Punjab, the old age homes are very less. Hardly there's any facility in the old age home. So people don't prefer to go there. So we don't have this concept of staying abroad, migrating to some other country in the old age and staying there. But in abroad, there's a major concept. Okay. So now let us see, how do you write this particular essay? But first of all, I would like to wish everybody who has joined this class. Let us wish everyone. First is Jaspinder Randhawa, wishing you a very good evening. Gurjas Kaur, very good evening. Sir, every Thursday, aap speaking conduct karte ho. Gurjas Kaur, it is not like that. I don't conduct speaking every Thursday. It is, we finish one particular module. We have finished reading. We have finished writing. Today is the last day for writing. And then we will move on to speaking. Once we complete speaking, we'll move on to listening. So I have changed the format of these classes because 3-4 days of one particular subject will give you full detailed knowledge of that particular subject. And in 10 and 12 days, you are sufficiently prepared. You are sufficiently prepared. Udaybir Singh Jammu, very good evening. Vinder Singh, very good evening. Ravi Randhawa, hi. And The Corona, good evening. Very good evening, The Corona. Okay. So we have these people and I wished everybody good evening. So now we are going to proceed. So now I am going to ask you a simple question, that when you have gone abroad, what will you do with your parents? When you have gone abroad, what will you do with your parents?
The whole family, your whole family will migrate. For example, if Varinder Singh is migrating, his whole family, his wife, his children, everybody will be going abroad. And if his parents are alone here, what is he going to do with the parents? So let us ask you, what are you going to do with your old parents? Okay, let me give me the answer. What are you going to do with your old parents? Let us see. Please write it down. What are you going to do with your old parents? Let's see the answer. Write the answer, please. Quickly write the answer so I can speak out the answers for you. Please write down, what are you going to do with your parents when you have gone abroad? Will you call them there? Or will you let them stay in India? Or will you tell them to go to some old age home and stay there? What option are you going to take? Please write down, what option are you going to take? Let us see the answer. What option do you have and what are you going to do? Write down the answers, please, so that I can discuss this essay. Write the answer. This is a very difficult essay, so we should know what are we talking about. All right, so you write the answer. Until that time, I'm going to move ahead. So we are going to discuss this essay now. What are the advantages and disadvantages of retired people choosing to live in other countries? Okay, so now let me minimize this screen. Let us not say old. Retired people staying abroad. We have advantages and we have disadvantages. So I want 2 advantages and 2 disadvantages of this. Okay. So Varinder Singh says, I will call them and stay with me in abroad. Yeah, that's the most of the things that people will do. They will call their parents and help them stay there. So leisure class is saying that I will help them financially. That is also one of the ways. That is also one of the ways that people choose. Okay. Now, suppose if they go abroad and stay there, not with you, they go alone abroad and they stay there. Okay. What is the advantage of those old people staying there abroad? Now, I will give you one example. What is happening in the world? A lot of people from Australia, from New Zealand, they come to Rishikesh and they stay there. You will find a lot of old people staying here in Rishikesh, staying in Varanasi, staying even in Amritsar. Foreigners staying here. They are staying, old people staying here. So now, what is the advantage of those people staying here? A lot of people from UK go to New Zealand to stay there. So New Zealand is a very peaceful country, extremely peaceful country. Why would they go to New Zealand to stay there? What can be the reason for this? Okay, let us see some more things. Jaspinder and Dhava says, I will call them to stay with me and I will take charge of the health. Okay. Let us see now the advantage and disadvantage of people staying abroad. Like people come from developed countries to India to stay here. Number 1 is peace of mind. Peace of mind. And number 2 is that they are away from hustle and bustle of daily routine. Getting up in the morning, going to work, doing the work yourself, and they are on a holiday. So they enjoy the retired holiday. So that's a wonderful thing. They enjoyed their retired holiday. What can be the disadvantage of this? The disadvantage of this can be a very major problem in case they have a health issue. In case they have a health issue, they're in the foreign country. It is very difficult. For example, if a white man comes to India and he stays in India and he gets sick, there is nothing we can do because their immune system is totally different as compared to our immune systems.
They will go to the hospitals, they will be ruining their life. That will be a very major problem. A very major problem. If they get sick, now suppose a person from UK goes to New Zealand to stay there for the rest of his retired life. He's going to face a lot of trouble if he doesn't have medical insurance, if he doesn't have proper healthcare facilities, doesn't have his own doctor. Everybody has their own doctors. That person is going to face a lot of facilities, a lot of problems. So health issues. Second is there can be loneliness. So loneliness can be there, right? They can feel extremely lonely when they come there. They can be very lonely, and because they don't have the children, they can feel very lonely there, right? So health issue and lonely are two disadvantages here. So now I have to write down this essay. What are the advantages and disadvantages of staying in some other country? So write 2 on both the sides. Whatever the answer is, give that answer. Now, if it's only advantages, then we'll see what to write. If it's only disadvantages, then we'll see. And if it's and, then also we'll see. Let us see the format first. How the format is, then you are going to write it down. Okay, one body para I want. Okay, now the tips. The first tip is plan for a few minutes before you start writing, like I have planned for you. Second tip, think about the ideas before writing, like what I have done. Third, while planning, make a list of ideas in the form of keywords, prioritize them with the most common ones to write in BP1 and BP2. Follow the order of the question. अगर क्वेश्चन में लिखा होगा एडवांटेज पहले आने तो एडवांटेज दो, अगर लिखा होगा डिसएडवांटेज पहले आने तो डिसएडवांटेज दो. जो उसका ऑर्डर है उसी ऑर्डर में हम लिखेंगे. Next step. There is no need to write any example in the conclusion, but it is necessary to write at least 2 examples in the essay. 2 एग्जाम्पल लिखने जरूरी है. कंक्लूजन लिखे ना लिखे डजंट मैटर. एग्जाम्पल कंक्लूजन में डालने की जरूरत नहीं होती. बी न्यूट्रल इन योर व्यू. आपको पूछा गया एडवांटेज डिसएडवांटेज, अगर आपका ओपिनियन नहीं पूछा गया तो मत लिखिए, बिल्कुल मत लिखिए. खाली उसने बोला एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, अपना विचार प्रकट मत कीजिए. पूछा ही नहीं तो क्यों प्रकट करना है. अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा जी. इंट्रोडक्शन आएगी, हुक लाइन अगर आपने डालनी है आपकी मर्जी है. नेक्स्ट इज sentence 1, paraphrase the question, both the points of views, and then thesis statement. आपका आंसर आ जाएगा. अगर मांगा है तो ठीक है, नहीं मांगा तो कोई बात. बॉडी पैरा 1, सेंटेंस 1, स्टेट फर्स्ट कैटेगरी. 2-3 सपोर्ट्स लगा दो इसको, एग्जाम्पल दे दो और रैप अप कर दो. पैरा 2 में सेम करेंगे. सेकंड कैटेगरी, जैसे पहली एडवांटेज थी दूसरी डिसएडवांटेज थी, तो वैसे लिख के सेकंड कैटेगरी इज गोइंग टू कम हियर, सब्सटैंशिएटेड बाय योर सपोर्ट्स, example to supports of this category, and last में wrap up कर देंगे. जो conclusion होगा वो मेरे 2-3 sentences की summary होगी, पूरे essay की summary होगी. तो ये तो बन गया जी मेरा फॉर्मेट 1, 2, 3 वाला. और अभी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मुझे इसके ऊपर, मैं इसका टॉपिक चेंज कर रहा हूं. What are the advantages for this? आप लोगों ने राइट 1 बॉडी पैरा. कल हमने इंट्रोडक्शन पैरा सबका देख लिया था. आज मेरे को बॉडी पैरा चेक करना है कि आप बॉडी पैरा कैसे लिखते हो. राइट 1 बॉडी पैरा एंड आई वांट टू चेक योर बॉडी पैरा. एडवांटेजेस के ऊपर लिखना है खाली, और ये आपके एडवांटेजेस हैं. पीस ऑफ माइंड, अवे फ्रॉम द हसल बसल ऑफ द डेली रूटीन, एंजॉयड द रिटायर्ड हॉलीडे. ठीक है, ये आ गया आपका एडवांटेजेस लिखने आपने एक पैरा में. तो मुझे सिर्फ एडवांटेजेस लिख के बताइए फटाफट. कल हमने काम किया था, बहुत लोगों का हाथ खुल गया राइटिंग में. आज फाइनल डे है, इसे कंप्लीट करेंगे हम. ओके, नेक्स्ट इज द कोरोना. ने मैसेज रिट्रैक्ट कर लिया. आई विल टेक चार्ज ऑफ देम. प्रिया बोलती गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग प्रिया. उदयवीर सिंह कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है. प्रिया ने मैसेज वापस कर दिया. डिसएडवांटेज होम सिक, राइट. नेक्स्ट इज वरिंदर सिंह. डिसएडवांटेजेस लिखते हैं फीलिंग डिप्रेस्ड बिकॉज दे आर नॉट फेमिलियर विद द प्लेस एज वेल एज द पीपल. वेरी गुड. जसविंदर कहती है दे फील आइसोलेटेड व्हिच लीड्स टू एंजाइटी इश्यूज. वेरी नाइस. बट मेरे को खाली एडवांटेज लिख के बताइए, पूरे पैरा का एडवांटेज लिख के दिखाइए. मेनी रिटायर्ड पीपल आर चूजिंग टू लिव इन अदर कंट्रीज. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस? फटाफट मेरे को इसका एक पैरा 80 वर्ड्स का बना के, एग्जाम्पल डाल के, सब कुछ करके आपने लिख के देना है मुझे.
80 वर्ड्स का एक पैरा आपने लिख के देना है. So you are going to write down the main point, supporting point, example, and अगर आपने फाइनल रैप अप करना है तो फाइनल लाइन, उसकी फाइनल एक लाइन बन जाएगी, वो आप मेरे को लिख के बताइए. जल्दी कीजिए, 80 वर्ड्स मुझे चाहिए इसके अंदर. 80 वर्ड्स, प्लीज हरी अप. 80 वर्ड्स. प्रिया ने लिखा है मेरे को कि सर प्लीज टेल मी कल सेशन होगा या नहीं, कबीर पार्क ब्रांच का होगा, किसी और ब्रांच का होगा. प्रिया, अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई. देखिए, सेशंस जो होते हैं वो मेरे हाथ में नहीं होते. मेरे को खाली बुलाया जाता है कि सेशन ले लो. जो पीछे से अरेंजमेंट होता है वो सब लोग अरेंजमेंट करके मुझे बताते हैं. वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर, क्या चाहते हैं वो, उनका एग्जाम कब आ रहा है, टीचर्स क्या करवा रहे हैं. तो सबका व्यू लेने के बाद ही हम कंडक्ट करते हैं सेशन. एक सेशन कंडक्ट हो चुका है, सेकंड सेशन कंडक्ट होगा, या कल होगा या परसों होगा. ये मुझे इन्फॉर्मेशन सुबह ही मिलेगी मेरे को. उससे पहले इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, आती नहीं मेरे पास इन्फॉर्मेशन. मेरे को सुबह सुबह 7 बजे इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो जब इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल जाएगी मैं आपको इमीडिएटली कन्वे कर दूंगा. आपकी सारी ब्रांच में आपका ब्रांच मैनेजर जो होगा आपको आके बता देगा. चलिए, आप फटाफट अपना ऐसे कंप्लीट कीजिए. 1 बॉडी पैरा मुझे लिख के दिखाइए, जल्दी से 1 बॉडी पैरा लिख के दिखाइए. फटाफट हो जाइए, कल से हम स्पीकिंग शुरू करेंगे. Please hurry up, write down the paragraph, body paragraph of this particular essay, just the advantages.
Okay, so I have seen a lot of people writing it down and retracting the messages. तो देखते हैं जी पहले सीना रॉकी आपका रिजल्ट देखते हैं क्या आया है। आपका रिजल्ट है कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स एग्जाम का 30 अक्टूबर का। लिसनिंग 8, रीडिंग 6.5, राइटिंग 6, स्पीकिंग 6, ओवरऑल 6.5। स्कोर्स एंड टीआरएफ विल बी फाइनल। तो आई डोंट नो आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये ओवरऑल 6 है, नथिंग लेस देन ओवरऑल 6.5 है, नथिंग लेस देन 6 है। अगर तो एकेडमिक का पेपर है फिर तो क्लियर हो गया, और अगर जनरल का पेपर है तब मेरे को पता नहीं है आपने किस कंट्री के लिए अप्लाई किया, क्या किया, आपको कितनी स्कोर चाहिए थी। तो आप मुझे बताइए क्या आपकी स्कोर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली देख लेते हैं क्या चाहिए, अगर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ऑल राइट, सो लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट एसे एकेडमिक। तो आपका तो क्लियर हो गया सीना रॉकी, आई थिंक सो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इज इट क्लियर और नॉट? I wanted to apply for the masters. Yeah, you can apply for masters in this. Yeah, you can apply for masters in this. It is allowed to apply for masters, nothing less than 6. तो आप कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपने डिग्री में जाना है कि डिप्लोमा में जाना है, किस में जाना है आपने। अगर आपने डिप्लोमा में जाना है तब तो एप्लीकेबल है, डिग्री में भी कुछ जगह पे एप्लीकेबल है। बट अगर आप ओके डोंट वरी, आप मेरे से एक बार कंसल्ट कर लीजिए, आई विल गाइड यू। एंड अगर आपने डिप्लोमा में जाना है तब तो 100% एप्लीकेबल है। डिग्रीज में जाना है तो कुछ जगह एप्लीकेबल नहीं होगा जहां पे 7 की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पे 7 की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे शायद ना हो, बट जहां पे रिक्वायरमेंट 6.5 की है वो तो इजीली एप्लीकेबल है। आपका केस बिल्कुल क्लियर है उसके अंदर। मास्टर्स डिग्री एमबीए डिपेंड्स ऑन विच कॉलेज आर यू गोइंग टू, सो यू बेटर टॉक टू मी, आई फिगर इट आउट आपने कैसे जाना है क्या करना है, सो विल फिक्स इट अप, ओके। And it's not a big problem. This score is very much applicable, don't worry. So let us go to our next essay. Our next essay is going to be, ये हमने कर लिया। अब हम करेंगे जी आज का नेक्स्ट essay। नेक्स्ट essay जो है हमारा वो होगा, देखिए 4 फॉर्मेट्स थे, इसमें से मैंने आपको 3 फॉर्मेट्स कवर करवाए हैं। 3 फॉर्मेट्स कवर करवाए हैं, फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2 एंड फॉर्मेट 3। अब हम करते हैं ये वाला फॉर्मेट, दैट इज कॉल्ड डू द एडवांटेजेस आउटनंबर द डिसएडवांटेजेस। नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस वन, ओके। सो लेट अस सी व्हाट डू वी हैव टू write in this particular essay and what do we have to think about in this particular essay. So let us see this format number 4। फिर ब्लॉग विजिट करते हैं। इस बारी ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ क्वेश्चंस जो आपने वहां से करने हैं। webberz.in पे जाएं, ब्लॉग में चले जाएं, ब्लॉग में जब जाएंगे आइल्स में जाके राइटिंग में चले जाएं। जब आइल्स की राइटिंग में जाएंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज आ जाएगा, जब आएगा ये तो यहाँ पे बैठ के हम क्वेश्चंस देख लेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो मैं रैंडमली क्वेश्चंस यहाँ से उठाता हूँ, मैं जूम कर देता हूँ इसको, हम रैंडमली क्वेश्चंस उठाएंगे और एक दो को हम स्टडी कर लेते हैं। Here, nowadays, a lot of offices employ open space design instead of separate rooms for the work. Do the advantages outweigh the disadvantages? फिर से वही बात आ गई, इंडिया में ये बहुत कम है open spaces. Number of open spaces are very less in India in the offices. Generally, they try to put a lot of rooms, lot of cabins, and the space becomes very restricted. So this again is applicable to Canada, Australia, जहां पे जगह बहुत खुली हैं वहां पे। गूगल का ऑफिस देखिए, फेसबुक का ऑफिस देखिए, तो उस तरह के ऑफिस की यहाँ बात कर रहे हैं। So let us see one more. In the future, all cars, buses, and trucks will be driverless. The only people traveling inside the vehicles will be passengers. Do you think advantages of driverless vehicles outweigh the disadvantages? Well, अभी भी हमारी बहुत सी ट्रेन्स जो हैं वो ड्राइवरलेस हैं, बहुत सी ट्रेन्स ड्राइवरलेस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेट्रो है, या अगर आप अब्रॉड जाते हैं तो वहां ना स्टेशन के अंदर ट्रेन्स, एयरपोर्ट्स के अंदर ट्रेन्स होती हैं। सो दे आर ड्राइवरलेस ट्रेन्स, दे जस्ट रन बाय द टाइमिंग खुला, दरवाजा खुला, अंदर जाए, बैठ जाए, ट्रेन चल पड़ेगी, फिर वापस आ जाएगी। सो इट इज ऑल एन ऑटोमेटेड सिस्टम। सो उसके फायदे या नुकसान पूछ रहे हैं। कोई हादसा हो जाए बहुत प्रॉब्लम आएगी, इस तरह की बातें हम लिख सकते हैं। इट्स एन इजी टॉपिक, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक।
और फायदा क्या है इसका? ऑब्वियसली व्हेन द ड्राइवर्स आर नॉट देयर, यू डोंट पे देम मनी। डिसएडवांटेज क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू डिस्कस। ओके, सो मैं सजेस्ट करूंगा, ये 32 टॉपिक्स हैं, these are 32 topics. I would suggest you to please discuss it with your teachers or discuss it with me so that you know which topics are difficult and we can find out the answers for them. Now we will go to our next part, and in the next part we are going to see, this is the essay. Now this essay is a very, very problematic essay. The personal information of many individuals is held by large internet companies and organizations. Do you think the advantages of this outweigh the disadvantages? तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपको क्या पसंद है, क्या आपको नापसंद है, ये सारा कुछ बड़ी बड़ी इंटरनेट की कंपनीज ने अपने पास रखा हुआ है। क्या इसका फायदा है या इसका नुकसान है? ज्यादा क्या है, फायदे या ज्यादा नुकसान? तो इस बारे में हमने डिस्कशन करनी है। तो यहां पे आई वुड सजेस्ट यू, इफ एनी टेक्निकल पर्सन इज सिटिंग हियर और वो कुछ ज्ञान डाल सकता है इसके ऊपर, तो मैं उसे अपने जूम के रूम में इनवाइट कर लेता हूं। प्लीज आके कुछ ज्ञान डालिए। अगर आप टेक्निकल हैं, अगर आपको पता है कि डेटा कैसे बड़ी कंपनीज लेती हैं हमारा, किस तरह से डेटा को यूज करती हैं, अगर आपको पता है इसके बारे में, तो प्लीज मेरे पास जूम रूम में आ जाएं। मैं आपको अपना नंबर देता हूं, मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, तो मैं आपको जूम रूम में बुला लूंगा, ठीक है? और वहां आके ज्ञान दीजिए सबको कि बड़ी कंपनीज किस तरह से डेटा को उठाती हैं और किस तरह से डेटा हमारा यूज किया जाता है। फाइन, उसके फायदे और नुकसान पूछे जा रहे हैं। ओके, सो नाउ आपके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ता हूं मैं। सीना रॉकी इज आस्किंग मी, हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर इमिग्रेशन? सीना रॉकी, यू आर गोइंग फॉर एकेडमिक वीजा और इमिग्रेशन? यू आर राइटिंग इमिग्रेशन, बट आप ऊपर एकेडमिक वीजा लिख रहे थे। Nowadays, some retired individuals prefer to stay away from their place. It leads to some serenity in their life. They confront numerous ups and downs in their life. Jaspinder Dhava says that is why they have no sufficient time to make themselves throughout the working days. Okay. तो इस पे जो भी आना चाहे प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं आपको बुला के अपने जूम रूम में बुला रहा हूँ फॉर डिस्कशन। अगर आप आना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम to come in the Zoom room. I will give you my link and you can come inside and take the link. Send me a message and I will call you. Send me the message, I will call you. Zoom room में आपको बुलाता हूं and it will become very easy. सबके लिए भला होगा सबका, अगर आप आके बता सकते हैं कि किस तरह से डेटा बड़ी बड़ी कंपनीज हमारा लेके यूज करती हैं। How do the countries give the material, take the data? Okay, if anybody wants to come in, they are most welcome to come inside and speak about it. See, it is Sinaraki, it is not immigration process, it is the academic study permit. Immigration means permanently settling there. With academic visa, you can't permanently settle there. The whole process, visa delivered by the embassy, takes about 3 to 4 months approximately. एक दो हफ्ते इधर उधर हो सकते हैं। 3 to 4 months it is taking today to file the case and get the result. For Canada, I'm saying. For Australia also, it's taking about 2 to 3 months. G, anybody is there for this? Otherwise, I will speak out. How the information is held by the large internet companies and organizations. तो देखते हैं जी इसके बारे में, किस तरह से आपका डेटा कंपनीज रखती हैं अपने पास। सो पहला तरीका है डेटा रखने का, जो आप डेटा एंटर करते हैं, whatever data you enter, वो कंपनीज के स्टोर रूम में चला जाता है, वो कंपनीज के स्टोर रूम में चला जाता है। ठीक है, डोंट वरी, मैं बता रहा हूं आपको जसविंदर, मैं आई एम टीचिंग यू। फॉर एग्जांपल, आपने फेसबुक पे अकाउंट बनाया या आपने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया
या किधर भी आपने गूगल जीमेल में अपना अकाउंट बनाया, तो वो डेटा आपका सारा कंपनीज ने अपने पास स्टोर करके रख लेना है। आपका फोन नंबर, आपका ईमेल अकाउंट, आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आपकी एज, आपका जेंडर, सब कुछ स्टोर करके वो रख लेते हैं। तो वो कंपनीज को बेच देते हैं जो कंपनीज उनसे डेटा मांगती हैं। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया। सेकेंड तरीका, जो आप किसी से बात करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे आपने कोई पेज को लाइक किया या आपने कोई चीज को व्यू किया, तो उसका डेटा भी वो अपने पास रख लेते हैं। तो उनको समझ आ जाता है कि इस बंदे को ये चीजें पसंद है, तो फिर वो कंपनीज को वो डेटा बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने शूज की पोस्ट को लाइक कर दिया, तो आपका डेटा शूज की कंपनी में चला जाएगा, तो आपको शूज की एड्स आनी शुरू हो जाएगी, अगर आपने इंस्टाग्राम में देखा। तो ये तो हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है, अगर आपने कोई भी और वेबसाइट खोली हुई है या कोई भी ऐप खोली हुई है, तो उस ऐप का डेटा भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, लिंक्डइन सारे कलेक्ट कर लेते हैं। और उनको पता चल जाता है कि इस बंदे का इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल आपने कोई गेम्स ऐप खोली है, पबजी खोली हुई है या कोई और गेम खोली हुई है, तो आपको गेम्स की एड्स के आनी शुरू हो जाएंगी वहां पे। दिस इज द वे दे यूज द डेटा, लार्ज कंपनीज यूज द डेटा। एक और तरीका भी है। नाउ फॉर एग्जांपल, इफ द फोन इज लाइंग इन द रूम एंड यू आर टॉकिंग टू समबडी, फॉर एग्जांपल योर फ्रेंड इज देयर एंड यू आर टॉकिंग टू द फ्रेंड कि मेरे को नाइकी के जूते लेने हैं, थोड़ी देर बाद आप नोट करोगे आपको नाइकी की एड्स आनी शुरू हो जाएंगी। सो देन व्हेन यू आर टॉकिंग टू अदर पीपल, द डेटा गेट्स कलेक्टेड एंड द डेटा कम्स ऑन, दे कलेक्ट द डेटा। The fifth way is, suppose if you are talking on your phone with somebody, they also listen to that, आप किससे बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, जो आपके कीवर्ड्स होते हैं वो स्टोर करके रख लेते हैं और आपको उसके हिसाब से एड्स आनी शुरू हो जाती हैं। So this is the way the data is kept in the large companies. अब जाके देखते हैं इस टॉपिक में लिखना क्या है। The personal information of many individuals is held by large internet companies and organizations. तो आपका बहुत सा डेटा इनके पास पड़ा होता है, हमें पता भी नहीं होता हमारा डेटा इनके पास पड़ा हुआ है। तो इसके फायदे और नुकसान देखते हैं। फायदा क्या होगा? इट मेक्स योर लाइफ वेरी वेरी इजी। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू सम आइडिया। सपोज इफ समबडी हैज गॉट डायबिटीज, तो उसको अगर डॉक्टर से अपने बात कर रहा है डायबिटीज के बारे में, उसको डायबिटीज की एड्स आनी शुरू हो जाएंगी कि ये दवाई लो, ये चीजें करो, आपको बेटर होगा आपकी लाइफ के लिए। सो इट बिकम्स वेरी इजी, आपको पूछना नहीं पड़ता किसी को, आपके पास इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है। द सेकेंड एडवांटेज ऑफ दिस इज दैट इट इज वेरी वेरी चीप। आपको गूगल खोलने की भी जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, खाली सोशल मीडिया पे जाए, आपका डेटा उनके पास पड़ा है, उन्होंने ऑटोमेटिकली यूज करना शुरू कर देना आपके डेटा को, आपकी लाइफ इजी बनाने के लिए। एंड इट्स अ वेरी चीप मेथड। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है इसका आपकी प्रिवेसी। आपकी प्रिवेसी, प्रिवेसी का मतलब है वट एवर यू आर डूइंग। सपोज आपने कोई भी ऐप को क्लिक किया, आपका डेटा उनके पास चला गया। सम पीपल डोंट लाइक इट, वो कहते हैं आप हमें क्यों देख रहे हो, हमें नहीं पसंद, हमें नहीं देखना आपको। अगर आप कोई बात करते हो किसी से, आपका डेटा, आपका फोन आपकी बात सुन लेता है। अगर आप कहीं पे जाते हो तो गूगल आपको ट्रैक कर लेता है, आप यहाँ गए थे, आप यहाँ गए थे, ये आपने बाय किया, उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है आपका, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या हो रहा है। सो दे हैव द फुल रिकॉर्ड ऑफ एवरी पर्सन हुज गॉट गूगल फोन, हुज गॉट गूगल मैप्स। तो उनके पास प्रिवेसी में पूरा इन्फ्रिंजमेंट है। दूसरा, इट कैन बी वेरी वेरी अनोइंग। जो आपने एड्स नहीं देखनी होती, आपको जबरदस्ती वो एड आ जाती है। इट कैन बी वेरी अनोइंग। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को आजकल रिसेंट एड आ रही है, कोई बीमार है, उसको लिवर चाहिए, किडनीज चाहिए, तो उसको किडनीज डोनेट कर दो। तो एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे पास एक स्टूडेंट था, ही वाज अ डॉक्टर, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट ऑर्गन ट्रांसप्लांट। मैंने उसे क्यू कार्ड दिया था, डिस्कशन कर रहा था ऑर्गन ट्रांसप्लांट के ऊपर, और फोन ने मेरी बात सुन ली। अब फोन ने मेरे को वो ऐड देनी शुरू कर दी कि ये आदमी बीमार है, ये बंदा बीमार है, इसको किडनीज चाहिए, किडनीज दे दो। You know, it can be very, very annoying. That was really annoying. So now I'm getting so many ads of these people who want to donate organs. That's crazy. So this can become a very problematic thing, right? So now the algorithms, as Sina Rocky says, the algorithms,
देख सी योर एल्गोरिथम, मतलब जो प्रोग्राम होता है उनका पीछे आपका बिहेवियर स्टडी करते रहते हैं, आपका डेटा लेते रहते हैं, बिहेवियर स्टडी करते रहते हैं। सो ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अब सवाल ये आता है ज्यादा क्या है, एडवांटेज ज्यादा है या डिसएडवांटेज ज्यादा है? तो जो इंटरनेट की कंपनीज हैं वो तो कहती हैं भी एडवांटेजेस ज्यादा हैं, जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो तो कहते हैं डिसएडवांटेज ज्यादा है। अब कुछ लोग हैं उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं डेटा चोरी हो रहा तो हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो लोग कहते हैं डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। जो प्राइवेट लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा कहते हैं जी मुझे ये प्राइवेसी चाहिए, मुझे प्राइवेट चीज चाहिए, तो उनके लिए डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। इंटरनेट कंपनीज कहती हैं जी बिल्कुल जस्टिफाइड है, हम तो आपको डेटा देख रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, और इसमें कोई ह्यूमन नहीं आता, आपकी बातें थोड़ी सुन रहा है कोई, तो कोई ह्यूमन नहीं आता, आपका हम डेटा को यूज कर रहे हैं, आपके डेटा को हम फैसिलिटी दे रहे हैं, आपको डेटा की फैसिलिटी है ये। तो अभी फायदा है कि नुकसान है, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता, ये आप पे डिपेंड करेगा आपने क्या लिखना है, आप पे डिपेंड करेगा व्हाट आर यू गोइंग टू राइट। सो नाउ आई वांट यू टू राइट डाउन इंट्रोडक्शन, you are going to write down the introduction of this essay, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस essay, पैराफ्रेज कीजिए, इसको पैराफ्रेज कीजिए, और इसका आपने लिखना है थीसिस। राइट डाउन द पैराफ्रेजिंग एंड राइट डाउन द थीसिस सो दैट वी नो इट दैट आपको इंट्रोडक्शन आ गई है। लिखने से पहले मैं इस डेटा को कंप्लीट कर देता हूं। तो मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव सारे बता दिए हैं। तो इसका फॉर्मेट क्या बनेगा, इसका फॉर्मेट बनेगा इंट्रोडक्शन BP1 जो ज्यादा है, BP2 जो ज्यादा है, 2 पॉइंट्स उसके आ जाएंगे, BP3 जिसके कम पॉइंट्स हैं, और समरी, और साथ में वाई मोर। आपने वाई ज्यादा क्यों लिखा, ज्यादा वाले पॉइंट्स क्यों लिखे आपने, तो वो बात हो जाएगी। वर्ड लिमिट इंट्रोडक्शन में 30 to 50 वर्ड्स, BP1 BP2 एंड BP3 60 to 70 वर्ड्स, एंड कंक्लूजन 30 to 50 वर्ड्स। अगर हम टिप्स की बात करें तो पहले कुछ मिनट प्लानिंग कीजिए, थिंक अबाउट द आइडियाज बिफोर राइटिंग, while planning make a list of the ideas in the form of keywords, prioritize them in the most common ones to write in BP1 BP2 and BP3, follow the order of the question statement when writing BP1 BP2 and BP3. There is no need to write an example in the conclusion, but it is necessary to write at least 2 examples in the essay. You will have to take the side either advantages or disadvantages, whichever is more, आपको वो साइड लेनी पड़ेगी। आप ही आपको बोले डू यू थिंक द एडवांटेजेस आर मोर देन द डिसएडवांटेजेस। तो बेसिक स्ट्रक्चर आ गया आपका, इंट्रोडक्शन, हुक लाइन, ऑप्शनल है सेंटेंस 1 सेंटेंस 3, थीसिस स्टेटमेंट आ गया जी। बॉडी पैराग्राफ 1 पहली बारी जो ज्यादा कैटेगरी है वो लिखेंगे, सेंटेंस 2 उसे एक सपोर्ट डाल दीजिए, एक सपोर्ट काफी है, एग्जाम्पल डाल दो। बॉडी पैरा 2 फिर से वो मेन कैटेगरी, क्योंकि इसमें ना छोटे पैरे बनेंगे तो ज्यादा लंबा नहीं हम लिख सकते, सपोर्ट डालो, एग्जाम्पल डालो। पैराग्राफ नंबर 3 लेस कैटेगरी बताओ, सपोर्ट डालो, एग्जाम्पल को स्किप कर दो। कंक्लूजन में 1 या 2 सेंटेंसेस समरी के डालो, और आप क्या प्रेफर करते हैं मोर कैटेगरी डाल दो। तो ये कंक्लूजन हो गया। अगर आपने हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर लीजिए, ब्लॉग बहुत बढ़िया हमारा बन चुका है, जाइए वहां देखिए, इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, लेटेस्ट अपडेट्स वहां पे आती हैं। ये व्हाट्सएप का नंबर है, जिसे आपने यूज करना है तो आप जरूर इसे यूज कर सकते हैं। तो अब हम इस पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन लिखने वाले हैं, तो इसका कृपया करके इंट्रोडक्शन लिखिए ताकि मैं आपको चेक करके बता सकूं हम कहां पे हैं। राइट डाउन द इंट्रोडक्शन, write down the introduction please, hurry up, write the introduction please, quickly write down the introduction, write down the paraphrasing, and write down what is more advantages or disadvantages. So please write it down.
30 से 50 शब्दों की इंट्रोडक्शन लिखिए प्लीज. Write down the introduction of 30 to 50 words. Please write down the introduction of this essay. Submit your introduction of this essay. The personal information of many individuals is held by large internet companies and organizations. Do you think the advantages of this outweigh the disadvantages? I want a thesis statement and a paraphrasing statement of this. Please write it down. We are running short of time. Please do it fast.
All right. So Jaspinder Randhawa says, as per the statement, private information of umpteen people is tracked by large internet companies and institutions. I emphatically believe that its disadvantages are overlapping its advantages. Udaybir Singh Jammu says, the personal privacy few of the people is held by massive internet multinational companies and organizations. According to me, it is many disadvantages. Udaybir Singh, there is a lot of grammatical mistake. You have to make it sure that your grammar is fine. It has many disadvantages. Please write more, the time is running out. Write more introductions. Company usually track on the people. Usually track on the people. Track the people. Track the people. Please write down more introductions. All the people who are there, write down more introductions. Okay, so now the next one is, please tell me about mistakes so I can work on the errors. Jaspinder, see, mistakes are always there. They're always there. So I always prefer that whenever you meet me in person, whenever I am there, meet me in person with the full complete essay. By 2 lines, the mistakes are going to be very less. Meet me with the full essay or WhatsApp me your essay. You have my number of WhatsApp. Write the full essay or whichever essay you've written, write it down, show it to me. Take a picture, show it to me. Then we'll discuss with the detailed writing, of what is going wrong in your writing. Dilshad Malik says, in this modern era, internet companies and organizations are holding personal information, Dilshad, of numerous masses. I believe that there are disadvantages outweigh than advantages. Dilshad, there are a lot of grammatical mistakes. Make it sure that you write right grammar, which is very, very important. Show me your full essay, complete essay. I can always call you here for the full essay, but there are a lot of mistakes which I cannot talk on a public platform. So please WhatsApp me your message, your full essay. So I will give you my WhatsApp number. I've written my WhatsApp number in the chat box, so you can see it and you can write an essay and show it to me. I can take out the full mistakes and give it back to you. Okay, so we have got a lot of people giving this input to me. So now let us do a recap of what we have done today. So we did the essay of advantages and disadvantages essay. I told you to follow us on social media, and I gave you the 4 types of advantage, disadvantage essays. I gave you 3 formats, format 1, 2, and 3. I made you visit the blog and showed you the latest thing that I have posted. Then we discussed this particular essay. Many retired people today are choosing to live in other countries. What are the advantages of this?
We did some pros and cons of this, some advantage and disadvantage. Then I told you to write down a body paragraph, and some people wrote the body paragraph. Then I told you the format, how the introduction would look, how the body would look, the word limits, and I gave you some tips on how to solve this particular thing. They are all recorded in this video. You can watch this video again to figure it out what's going on. The basic structure was told to you of the introduction, then the paragraphs, then the second paragraph, then the conclusion. And then I discussed format 4, that is called as advantages outweigh disadvantages. And we discussed exactly the same thing. I gave you the format, I gave you the ideas how to do it. The word limits was decided. I gave you a lot of tips, gave you the basic introduction, body paragraphs. 3 body paragraphs are going to come here. So we discussed that, and the conclusion is going to come. So this was the end of our session. And from tomorrow onwards, we are going to start with the speaking sessions, because I'm seeing there's a lot of problem coming in the speaking area. So we will figure out the speaking problems of yours. So please be ready, because I'm going to call some people from you and discuss the speaking and discuss a lot of speaking. So make it sure that you're ready for the next 3 days with your speaking sessions. Then we will start with the listening class. We will do another 3 days for listening class, and the entire thing would be complete. Listening, reading, writing, speaking, total in depth, it is going to be complete. With this, we come to the end. Udaybir Singh Jammu has written something else. In the modern era, mostly youngers use cell phone with the help of internet technologies based on artificial intelligence. Okay, Udaybir, how is it connected to the topic? एक essay लिख के मेरे को WhatsApp करो. मैं आपको डिटेल में चेकअप करके बता देता हूँ. With this, we come to the end of our session today. Have a good night and see you tomorrow.